look after them, that's also a big moral responsibility of the communities and our society, because they are very very vulnerable. तो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इवन इन द एल्डरली एंड रिटायर्ड एज ग्रुप, धीरे धीरे वो लोग भी अब आ रहे हैं, थोड़े से ना टेक सेवी हो रहे हैं. सो Exactly. दे आर Yeah. लर्निंग टू बी ऑन व्हाट्सएप पे हैं या फेसबुक पे हैं. सो इट्स वेरी गुड फॉर देम दो. आई रियली फाइंड इट वेरी नाइस. नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गौरव, और इस पॉडकास्ट के थ्रू दिस मीडियम आई लाइक टू just share that there is enough evidence and a lot of work is happening, research is happening worldwide, in which they are saying that loneliness is the next big epidemic. Right. तो पहले हमेशा हम इंडिया में लोनली होने की बात सोच भी नहीं पाते थे, कि लोग चाहते थे कि भाई हमें थोड़ी देर अकेला रहना है, बट वो बिकॉज ऑफ द सोशल सेटअप वो अकेले अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते थे. करेक्ट. वो ऑपोजिट था कि यार कुछ तो टाइम दे दो, कुछ तो टाइम दे दो. लोगों को भागना पड़ता था दूर की, हाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए. और जैसे होता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो बहुत ज्यादा स्पेस जब डिमांड करने लग गए लोग, बहुत ज्यादा स्पेस मांगने लगे, तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग लोनली. राइट. तो और ये लोनलीनेस धीरे धीरे अपने यहाँ इंडिया में क्रीप इन कर रही है. ये आई हैव नोटिस्ड कि जब आप न्यूक्लियर सेटअप्स जो हैं फैमिली के, और अपनी फैमिली से तो कई सारे लोग स्टडीज के लिए या जॉब करने के लिए अपना जो बेस कैंप है, सो टू से, अपनी सिटी या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से दूर रहते हैं. सो इट्स वेरी इजी टू बी लोनली. तो एंड लोनलीनेस इज समथिंग जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे कैन कम इन, और इसलिए दैट्स समथिंग विच पीपल शुड बी अवेयर ऑफ. Reach out, make friends, make some social connections. Making social connections is very very important. और वहीं पे आपका जो पूरा ये पॉडकास्ट जो आपने स्टार्ट किया है, क्रिएटिव जिंदगी, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि टू अवॉइड लोनलीनेस, अगर वो किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो it's much better for their mental well-being. Be it sports, be it music, learning a new instrument, learning to dance, या कुछ भी, किसी भी तरह की हॉबी लाइक पेंटिंग, या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी which can take them out of the house and make them meet different people, learn a new skill, and make those connections, and to avoid any kind of mental illness. From this, another point, Richa, we are talking about social connections, and we know that this is a age of social media. तो जो social connection है वो social media पे आजकल ज्यादा हो गया. तो आपको क्या लगता है कि is it also a good medium? It may not be at par with actual social connection in physical sense कि हम जा रहे हैं बाहर hang out कर रहे हैं. Does it also help to connect people over social media and make bonds, and maybe is it also helpful in a way? काफी loneliness तो है, we all agree to it, and it may not be possible for people to go out for everyone. That's true. So does social media is it a good way to open up for certain people? All right, I think it's a very very important aspect to talk about, Gaurav. Importance of social media in today's life and its advantages and disadvantages. I would like to bring to your notice, there are two, when we talk about mental health illnesses, दो extreme ages अगर हम लेते हैं, it's very important point.
एक तो हम ले लेते हैं, टीनेजर्स को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। राइट। सो एक एक स्पेक्ट्रम हो गया टीनेजर्स का, और दूसरा एंड ऑफ द, एक पोल हो गया ये, और दूसरा पोल अगर हम मान लेते हैं रिटायर्ड पीपल एंड एल्डरली पीपल। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, दे आर एट, जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस और बर्नआउट होता है, जो कि पीपल हु आर इन द वर्क फोर्स, भाग दौड़ वाली लाइफ है, अपने लिए टाइम नहीं है वो सब। लेकिन ये दो जो हम ग्रुप्स की बात हम लोग कर रहे हैं, टीनेजर्स एंड एल्डरली पीपल, रिटायर्ड, पोस्ट रिटायरमेंट, इन लोग की टू बेसिकली लुक आफ्टर देम, दैट्स ऑल्सो अ बिग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज एंड अ सोसाइटी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल। तो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, वहां पे हमें टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, कि सोशल मीडिया कैन बी अ वेरी वेरी बिग, how should I say, a bad influence, obviously we all know, on young adults or young people, or teenagers, राइट। because of a lot of peer pressure, because of a lot of bullying which happens on social media, and we really don't know how safe they are on social राइट। media. तो सेफ्टी इशू हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की, आई हैव एक्चुअली सीन एडोलेसेंट्स सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ बीइंग स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज बुलिंग होती है, ओपनली होती है, और दैट इज वन थिंग। सो ये एक ह्यूज डिसएडवांटेज जो हम, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दैट, एंड राइट। दैट्स समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर। Coming to the next point where social media can play a nice role as well, और उसमें हम बात करते हैं कि finding the right kind of people on social media to connect with, करेक्ट। that is very very important. अब जो अपने, I would just say, getting in touch with like-minded people, interest अगर similar हैं, getting engaged in these kind of group activities, maybe it's social media, but then friendships can start happening from here राइट। once you get to know each other well. But again, this I am talking about adults, where people have that sense of right and wrong, and they can have they have a bit of a insight and judgment as well, कि हम सही direction में हैं या नहीं, are we interacting with the right people or not. So वहां पे it can play a big role to engage with people, to get out there, meet people with similar interests, and then make friendships. These days, I'll give you one example. Even in the elderly and retired age group, धीरे धीरे वो लोग भी अब आ रहे हैं, थोड़े से ना टेक savvy हो रहे हैं. So Exactly. they're Yeah. learning to be on WhatsApp पे हैं या Facebook पे हैं. So it's very good for them though. I really find it very nice for them to be connected with the world, be connected with their children or their friends. तो वहां पे definitely it is a good thing. Correct. And even I would like to add one thing here. So Instagram is considered to for the teenagers, right? जो young people, yeah. So we I mean, I joined it few years back, 2-3 years back, because prior to that I used to think, I mean, क्या है, photos डाल रहे हैं, that's it. But then we kind of tried, because I started writing, I started posting there, and then kind of connected with many people. So वहाँ मैंने एक ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, I mean retired, especially retired, who are finally coming up, sharing their writings or other hobbies, and they are making bonds, which is excellent and highlights whatever you have just spoken कि उनके लिए वो beneficial है. Because somehow yeah, so and they know the world, they have vast experience, उनको पता है कि कैसे manage करना है. So they are coming out and they are actually using it, and they feel happy how to use hashtags or maybe new stuff. So उनको वो अच्छा लगता है, उनके लिए learning भी है. So I think one great example, and we know Amitabh Bachchan, right? He's the most
एक्टिव पर्सन ऑन ट्विटर, वो डेली एक ट्वीट करते रहते हैं. तो आई मीन वो we can troll him or maybe judge him, but the one thing is हाँ at his age he's doing something which is exciting him, which is making him happy and helping him stay connected with the world. So वो भी एक I mean it's a good aspect, but for yes, the side effects or the challenges for younger folks is definitely there, and we need to watch out yes, for them. Yeah, we need to watch out yeah, for that. And it's so good to talk about elderly population because yeah. वो lonely बहुत easily हो सकते हैं, क्योंकि Mhm. at some stage they also start feeling as if there's no purpose in life because बच्चे सेटल हो गए हैं, जॉब से अब रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है. और मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में काफी सारे एल्डरली लोगों में डिप्रेशन देखा है, बहुत सारे लोगों में. तो दैट इज वन वल्नरेबल एज ग्रुप, एंड I would say through this medium to everyone that we should all watch out for these any kind of signs, symptoms. And social media, yes, is very beneficial for them, definitely, to stay connected with the world. But yes, human engagement is the prime thing. I mean, Right. उसका तो कोई comparison है ही नहीं. Right. Yeah. So मेरा यही question, I mean एक question था भी कि who all are at risk when we talk about mental issues. So as you said, हाँ एक जी. तो adolescent में है the younger folks, and then the people who are who are retired or maybe elderly people. So Yes. these two groups are more vulnerable as per you, or the people in between also? I mean, is there any specific age group which is Okay. at big risk? एज ग्रुप की हम बात करते हैं तो ये दो वल्नरेबल ग्रुप्स तो हैं, यंग एंड ओल्ड एज ग्रुप जो हैं. बाकी इन द मिडल, आई गेस जो भी वर्कफोर्स में हैं, दे आर equally at risk, I would say, depending on one's personality as well. So बहुत सारे इसमें different aspects होते हैं. हमारी हर एक की एक inherent personality होती है, गौरव. तो कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और they take things to their heart a lot as compared to others who are more practical and ज्यादा सोचते नहीं है चीजों को, बार बार उस ओवरथिंक नहीं करते हैं या वो. सो ऑब्वियसली पीपल हु आर मोर सेंसिटिव एंड इमोशनल बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी टाइप, दे आर मोर एट रिस्क. उस तरह से अगर हम देखें. और एक एज ग्रुप है जैसे यंगस्टर्स की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज हॉर्मोन्स एकदम से फ्लो कर रहे हैं, पीयर प्रेशर है, एक सर्टेन टाइप की फैशन, हमें ऐसा दिखना है, एक तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, और एक डिफाइंड पर्सनैलिटी हो जाती है कि पेरेंट्स तो गलत ही होंगे अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. तो इसलिए ये सारी चीजें, और वहां पे ऐसा होता है कि द काइंड ऑफ कंपनी दे कीप, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा उनके ऊपर. एक फीमेल्स में आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वन पर्टिकुलर एज ग्रुप जहाँ पे दे आर एट रिस्क ऑफ अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज. एक एज होती है जिसे हम मेनोपॉजल एज बोलते हैं, जो कि मिड 40s से लेके मिड 50s तक, दिस इज दैट एज ग्रुप. तो हम इस बारे में इतने ओपनली बात करते नहीं है, बट दिस इज वन एज ग्रुप इन फीमेल्स where they are obviously they are quite vulnerable. So if people are noticing that their behavior is changing a little bit, so it could be because of all the hormonal changes happening in them, और उसकी वजह से मूड अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स, एंगर, ये सब भी हो सकता है. तो आई थिंक आई एम पर्सनली being a female plus being a doctor who looks after a lot of female patients, this is one age group I always watch out for. तो ये different age groups हैं. बाकी जो everyone else in between, they are at equal risk of stress and burnout in this day and age, Gaurav. Right. Unless they are thinking about slowing the pace of their life a little bit.
Yeah, valid point, Richa. And we all are at risk, but the thing is, we should not be too worried or to not. We should not think about these things and make it worry itself. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें और उसको एक अलग तरह का उससे स्टिग्मा लोग बना वरी दें. हो राइट, जाएं कि राइट. सो हाँ मैं मुझे बिल्कुल। ये लगता है कि वन थिंग विच यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ठीक है, ये जो सिम्टम है कुछ टाइम तक है तो हम्म, इट इज फाइन, हाँ, राइट. फ्यू हम्म, मंथ्स तक है तो इट इज फाइन, बट कि अगर आपको बिल्कुल ही रोक दें अपना काम हम्म, करने से, तब ये इशू है, राइट. सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग कि नहीं, अच्छा मेरा तो ये 2 किलो वेट बढ़ गया तो कुछ तो दिक्कत है. ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए. नहीं नहीं या नहीं नहीं। ओवर तो प्रोटेक्टिव भी नहीं हो जाना चाहिए हमें. नहीं नहीं तो नहीं, या ओवर भी नहीं होना चाहिए हाँ, कई बार। इट्स गुड टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ एज वेल। कोई एग्जैक्टली. ऐसा अगर इवेंट हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वी शुड बी काइंड टू आवरसेल्व्स एंड गिव आवरसेल्व्स सम टाइम टू एग्जैक्टली. कोप विद दैट। कि कुछ महीने अपने आप को दो, अगर आप ग्रीव कर रहे हो किसी के लॉस से या एक रिलेशनशिप से, या कोई रिजल्ट एग्जाम का खराब आया है, या फिर जॉब में इश्यूज हैं, तो वी नीड टू बी काइंड एंड थोड़ा या सा टाइम जब निकल जाता है उसके बियॉन्ड भी अगर आपके ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं, देन टॉक टू समवन। तो एग्जैक्टली. Yeah, this brings another fact that it is not bad to be sad, I would say. कोई अगर दुखी है, हम्म, it is good because they are expressing themselves. क्योंकि होता क्या है कि ना कि कोई अगर कुछ थोड़ा दुखी कोई दिखता है हमें, तो हम हम्म, वी ट्राई टू पेप देम अप कि चलो नहीं सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, चलो मूव ऑन. वी instead of listening to them or relating to them, we kind of push them. So that's kind of नेगेटिव यस, पॉजिटिविटी, आई वुड से फॉल्स पॉजिटिविटी. उससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए बिकॉज आई वाज रीडिंग थोड़ा सा समथिंग बचना अराउंड इट. चाहिए या कि क्योंकि लेट देम. everyone या. has bad days. या. It's okay to cry. It's okay to be sad. It's okay to take a day off if you're not एग्जैक्टली. feeling mentally okay. So राइट. it should everything in moderation, everything in flow. So ज्यादा ओवरथिंक भी ना करें, और अगर as I said, as you said as well, कि let's not worry too much about that everyone's at risk. What if we have this? राइट. So another important thing, Gaurav, is, remember we touched upon the creativity side of things to deal with loneliness or deal with the fast pace of life or to deal with stress and burnout in general. So I'll just let people know about few things which psychologists generally do for mild mental health illnesses. एक तो होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि दैट इज टू मच टेक्निकल, उसमें हम जाएंगे नहीं। एक इसमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट भी होता है कि भाई आप एक्सेप्ट करिए ये चीज है, और एक उसमें चीज होती है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें। क्या, जिन लोग को एंजाइटी होती है या जो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या डिस्ट्रेस में है, उनको एक एक्टिविटी कराते हैं। या तो ये कुछ एक्टिविटी बुक्स आती हैं, माइंडफुलनेस बुक्स। तो उसमें बहुत ही फाइन पिक्चर्स होते हैं जिसमें बैठ के उनसे हम लोग कहते हैं कि आप कलरिंग करिए। ओके. तो चाहे पेंसिल कलर्स हैं या फिर पेंट्स हैं, तो बिकॉज व्हेन, या फिर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो, याद है हम लोग बचपन में वो करते थे एक्टिविटी डॉट टू डॉट ज्वाइन करके। तो these kind of activities, they are mindfulness activity because you are living in the moment that time, because your mind is so focused on that particular thing which you are doing, that आप जो भी आपके अनहेल्पफुल थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप एंगेज्ड हैं किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में। तो ये तो हो गया जो आप उस तरह से एक एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन what I generally advise people is to look for certain activities in life जिनमें वो माइंडफुलनेस हो उस एक्टिविटी में। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। गार्डनिंग है फॉर एग्जांपल। अब
लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, वो पॉट्स लेके आए हैं, उसमें प्लांट्स लगा रहे हैं. If they start looking after the plants every day and they are watching a flower bloom or growth of that plant by their hard work, or वो that is a very very positive emotion which people feel. वो एक्टिविटी करते हुए भी और उसके रिजल्ट्स देख के भी. एक स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कर सकते हैं स्पोर्ट, बिकॉज जब भी हम कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं हमारे ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं. दे जस्ट मेक अस हैप्पी. तो कोई भी एक्सरसाइज है, कोई एरोबिक एक्टिविटी घर पे आप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं आप, या फिर कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो सब एक तरह से ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम सब कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हमें जगह बनानी भी चाहिए इन चीजों के लिए अपने रूटीन में. तो अब आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माइंडफुलनेस फॉर यू, इजंट इट? क्योंकि आप अपने थॉट्स के साथ हैं उस टाइम पे, यू आर लिविंग इन द मोमेंट. आई गेस एवरी पर्सन शुड हैव अ कपल ऑफ दीज whatever they like doing, couple of hobbies, जिनसे कि उनको they feel better and they get that positive surge of emotions in their brain as well. Nice point. Yeah. And another thought from this, I remember reading an article in a newspaper couple of days, I mean few days back. It was a research from I think in US that if you do certain creative activity, like you said painting, or maybe writing or something like that, which keeps you in the present moment, तब वो जो time frame है, if you are painting for let's say half an hour, it is equivalent to many hours of deep sleep. I mean, equivalent in terms of benefits which it gives to a person. So I mean, it reminded me of that fact. And another was, which is interesting, and it is about the previous point which we were discussing about being how being sad or expressing your emotion is a good thing. That हमें लगता है ना कि वो जैसे आप गजल सुनते थे, या मतलब आपको हैबिट है, या मैं सुनता हूँ, तो कई बार हमें वो जो चीज है जो हम गजल सुन रहे हैं, गजल नॉर्मली मतलब या तो फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस है या एक्सट्रीम वो सैड ही होती हैं गजलें. तो वो लोगों को क्या लगता है जो नहीं सुनते कि यार ये तो मतलब दुख भरी चीज है, दुखियारे होके बैठे हुए हैं ये लोग. बट आई मीन नाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, और मे बी एटलीस्ट रिसर्च, दैट दे ब्रिंग आउट सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन अस. क्योंकि वो जो हम सैड सॉन्ग भी सुन रहे हैं ना, वो हम सैड होके नहीं सुन रहे हैं, that is bringing some sort of positivity in us. So because it is, you are basically appreciating the work of that writer as well, right? And yes, you're right. कोई भी एक्टिविटी हो, इवन अगर, और एक और चीज है गौरव, कुछ लोग अगर कोई सैड मूवी देखते हुए उनके आंसू आते हैं, या फिर कोई सैड सॉन्ग सुन के उन्हें रोना आता है, या किसी की स्टोरी सुन के या किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस सुन के अगर इफ दे फील सैड, आई वुड से दैट इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, right? Isn't it? And perhaps that's the reason movies are so famous. I mean, people watch movies, they cry, they laugh, they relate to it. So because that brings out your human emotions as well. तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि जो भी इंसान दूसरों के दुख दर्द से कुछ थोड़ा परेशान भी होता है, वो बहुत अच्छा इंसान है. ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग है, डेफिनेटली. Okay, so coming out of this discussion, Richa, I mean, do you write also? I think you write. Maybe poems yes, or Gaurav, something. I write whenever there's always these thoughts which keep coming in my mind, and yes, I like to write a few things. छोटी सी कोई नज्म कभी लिख ली किसी पर्टिकुलर थॉट पे, या फिर उस तरह से. So that's my yes, I do that. Anything which you might like to recite?
अभी आप कुछ सुना सकते हो? Anything you remember? इस टाइम पे मैं ऐसा करूंगी, आई विल शेयर दैट लेटर, बिकॉज आई हैव अ फ्यू थिंग्स विद मी, बट एज सच याद नहीं है रिसाइट करने के हिसाब से, सो आई जस्ट नीड माई डायरी फॉर That is दैट. fine. And and what all you do in terms of creative work? You mentioned that just to deal with the kind of work which you do. Because एक और Yeah. point था जहाँ I was talking to someone or reading something कि जो mental health practitioners हैं और जो psychologists हैं, they deal with sad people basically who are depressed. So doesn't that make them automatically sad? And how do they deal with that situation? So how do you do that? तो ये बात तो आपकी सही है गौरव, के ये जो वर्क है, ये तो काफी, इसका इमोशनल बर्डन तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोगों का, व्हेन यू आर डीलिंग विद सैड पीपल, डिप्रेस्ड पीपल, एंशियस, और आप उनकी साइकोथेरेपी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी सैड स्टोरीज भी सुन रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं तो वो आपको अफेक्ट करता ही है. बट अगेन, मेडिसिन में हमेशा सिखाते हैं कि यू शुड नॉट कैरी द बर्डन ऑफ द पेशेंट व्हेन यू लीव द ऑफिस. जब आप क्लिनिक छोड़ते हैं तो आप अपना पूरा बैगेज वहीं पे छोड़ के आएंगे, नहीं तो आप नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. हालांकि डिफिकल्ट हो जाता है कि कई बार आप सोचते भी रहते हो उस बारे में, बट इट्स ऑलवेज गुड टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट थिंग. कि मेरे सामने, आई एम डूइंग माई जॉब, मेरे सामने एक केस है एंड आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर देम टू मेक देम फील बेटर, बट मुझे ये इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब. तो जनरली यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है गौरव, कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स जो हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो अपने लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं टू अनपैक देयर ओन इमोशंस. कि भाई जाके आप थोड़ी, क्योंकि थोड़ा सा आप उनसे बात करके या वो थोड़ा सा बेटर फील करें. आई पर्सनली हैव नॉट डन दैट, बिकॉज एज यू नो, बीइंग इंडियन, हमेशा ऐसा लगता है वी आर वेरी मेंटली रेजिलिएंट एंड वील डील विद इट. तो मैंने extra I have immune not है लोग. done that. Nice. So, and what you were asking me about, what all I do outside my work, यहाँ पे चूंकि एक there's a sizable number of Indians in the town, and उनकी एक community भी है, काफी closely knit community है, तो I remain engaged with the community at different levels. के कोई अगर एक शो कंडक्ट कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है इंडियन कल्चर को एग्जिबिट करने के लिए, सो आई रिमेन काइंड ऑफ engaged with that. उसके अलावा I've hosted shows and all, like as a MC or as a host for the stage. That is something I really enjoy. So I've done that for a few shows which we've had here. And outside of that, I write, I read, and I engage with online engagement. मेरा बस इतना ही है, जो कि और दूसरे क्रिएटिव लोग हैं उनके साथ ही है. Yes, I think that's very much what I do. Okay, nice. It was lovely talking to you, Richa, and it was kind of a free therapy which I got after talking to you, because I got to know so many things about myself, about people who are, I mean, my loved ones or family, and I could relate to so many things, because when you talk about people at old age, how they are behaving, how they are suddenly getting angry,
because Mm-hmm. most of them have health issues, or maybe, I mean, with age, it tends to get difficult for them. And we who are not at that age, we kind of neglected. We say, okay, 60 plus हो गए, ठीक है, इनको ऐसे ही करना है, तो we leave it. So we should be sensitive. Many things. It was pleasure Many talking to things. you. Yeah, yeah. And I'm sure But people who are listening, they can relate to it and especially learn from it. And why I wanted to talk to you in India, I mean, obviously the stigma is less, but it is still there. I have seen it in past few years, especially after COVID. The yes, lifestyle has changed. People are more into remote work, and the challenges are different. So we need to talk about it more so that we are ready to handle any such situation. any such Yeah, situation. yeah. And I will again say that, Gaurav, and to all the listeners as well, that not everyone needs medication. So the stigma Exactly. should be removed completely. Most of the problems can be solved by listening to someone or by talking about it. So talking and listening and giving someone your precious time is the best gift you can give in this day and age. And in the end, if you can make even the slightest of difference in someone's life, I think that's the biggest reward you get. So Yep. um, Agree. Totally agree. So we'll wrap it here, Richa, unless you have something to add. And I think, and I hope that you would be able to spare some more time in case our listeners come back with specific questions, and you may want to clarify them or maybe guide them through in future sure. episodes. No, I'm more than happy to do that, Gaurav. More than happy. Thank you so much for having me. And as I said, even if we can make difference in one person's life, that's really a big satisfaction end of the day and a big reward. So thank you so much. Thank you so much, Richa. And I would wait for your nazm. वो हम ऐड करेंगे. Yes, next time. That's happening next time. Okay. All right. Thank you, Richa. Take care. Okay. Bye, Gaurav. Bye. The idea behind this writing is, at times, in order to make a living, we forget living. In order to make a better life, we forget the best parts of life. Keeping that sentiment in mind, I've written this piece, and I hope you will like it, and many people would be able to relate to this as well. So the title of this writing is एक बेहतर जिंदगी. आशा है आप सबको ये पसंद आएगी. एक बेहतर जिंदगी. जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में, जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में इस कदर हुए मसरूफ. जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में इस कदर हुए मसरूफ. कई दिनों से जिंदगी से मुलाकात न हो सकी. ढूंढना चाहा उसे तो मिली नहीं. कभी छुप जाती है लैपटॉप के नीचे, तो कभी कार की तेज रफ्तार में, या फिर कैलेंडर पर दिन ब दिन बदलती तारीखों में. और कभी यूं ही फिसल पड़ती है किसी पुरानी डायरी के पन्नों से, तो कभी मुस्कुराती है किसी पुरानी तस्वीर से. कभी नजर आ जाती है दराज में पड़ी पुरानी चिट्ठियों में, तो कभी यादों पर पड़ी धूल में झिलमिलाती है. याद है मुझे कुछ वक्त पहले जब साथ थी वो मेरे. गाल थपथपा के कहा था उससे, सुनो यहीं मेरा इंतजार करना,
अभी मुझे बहुत दूर है जाना, तुझे बेहतर जो है बनाना। और अब लगता है जैसे कह रही हो, सुनो मुझे और बेहतर ना बनाओ, बस वक्त दो अपना। और मैं जिंदगी को अनसुना कर उसे घर पर ही रख फिर से निकल पड़ी हूँ जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में, जिंदगी को बेहतर बनाने की मुहिम में। थैंक यू। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।